So, good afternoon, all of the students. Welcome to our English class again. And previous class we continued the piece of prose that is on examinations, and it is written by Winston Spencer Churchill. Okay, so without wasting our time, let us reconnect with the paragraph 2. Okay, we have completed paragraph 1 or unit 1, paragraph 1. Today we will start from paragraph 2. So definitely I would like to reconnect you what was taught in previous class. Winston Spencer Churchill, he entered into the inhospitable region of examination at the age of 12. Actually, he was the student of Standard 3 of Eton School. So when he completed his Standard 3 and he went to get admission into higher class, that is Standard 4 in Harrow School. Harrow School was a frontline school and it was a famous and reputed school of that country. So when he entered into that entrance examination, he found something different. Actually, his liking subjects were poetry, history, writing essay, but the examiners put different language question, that is in Latin language and the mathematics chapter. So these both subjects were disliked by Winston Churchill, so he could not do well in examination. Okay, so he wanted to show off his talent, but his ignorance came out. Okay, his ignorance came out. So let us start without delay. Okay, so paragraph 2. Today we will discuss what's about the exam result of Winston Spencer Churchill. So when he appeared the examination, entrance examination, what was his result? Whether he appeared the exam or not. And who was Winston Churchill? Today you will get a new address of Winston Spencer Churchill. But in first period, I gave you a small remarks about Winston Spencer Churchill, that he was an orator, he was a statesman, he was the two-time Prime Minister of England, and also, he was an army officer. So besides this, today I will give you a new address of Winston Spencer Churchill. And next one, how was Dr. Weldon? So last period I also gave a small introduction about Dr. Weldon. So who was Dr. Weldon? So let us start this topic without any delay. This was especially true of my entrance examination to Harrow. The headmaster, Dr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin prose. He showed discernment in judging my general ability. So Dr. Weldon was the headmaster of Harrow School. He was the headmaster of Harrow School. So he showed a broad-minded view. What type of broad-minded view? As Winston Spencer Churchill could not do well in his examination, but Dr. Weldon did not mind at all. He did not think about the worst condition of his entrance examination. That is why, he showed a broad-minded view of my Latin prose. ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ ଟେ ଅଛି ଯେ how Dr. Weldon showed broad-minded view of his Latin prose. Just before we were discussing that he didn't know Latin language.
आमे भलसे जानिछे ताको लैटिन लैंग्वेज जणा नथिला, ताको मैथमेटिक्स ताकर भल हो नथिला, बट से गोटे बहुत बढ़िया लैटिन प्रोज लिखिछंती। से कौन कहले, डॉक्टर वेल डन, मोर लैटिन प्रोज देखिकी पूरा पूरी फिदा है गले। हाउ इट इज पॉसिबल, एटा संभव केमिति देखि परछ से लाइनटा। However, he took a broad-minded view of my Latin prose. More Latin prose रे से broad-minded view है दले। Okay, so he showed discernment in judging my general ability. What do you mean by discernment? Discernment means judgment. He showed judgment. He gave a good judgment to my Latin prose. गोटे क्वेश्चन मन भीतर निश्चित भाव आसथियो जे सर से तो लैटिन लैंग्वेज तक जणा नथिला, से केमिति गोटे लैटिन प्रोज लिखिले और से लैटिन प्रोज देखिकी डॉक्टर वेल्डन केमिति इंप्रेस हेले। एटा नेक्स्ट पळे आसी आ 2 लाइन्स पर पळे आसीओ से केमिति का लैटिन प्रोज लिखछथि आ ए सेंटेंस ता केते जरो ठीक, ए सेंटेंस ता एक्चुअली पॉजिटिव सेंटेंस ना नेगेटिव सेंटेंस, और ए सेंटेंस ता गोटे आयरोनिकल सेंटेंस ना कोन हमें लेटर डिस्कशन करिया गोटे लाइन परे। This was the more remarkable because I was found unable to answer a single question in the Latin paper. I wrote my name at the top of the page. I wrote down the number of the question, that is 1. After much reflection, I put a bracket round it. Thus, it is like that. So see, this is the answer sheet of Spencer Churchill. Answer sheet of Spencer Churchill. आमको जब परीक्षा टाइम रोड आंसर सीट मिले ना, नहीं लेफ्ट साइड पे फोल्ड कर दोचे, ऊपर कौन लिखुचे, नेम लिखुचे, रोल नंबर लिखुचे, क्लास लिखुचे, सब्जेक्ट लिखुचे, डेट लिखुचे, सेही टाइप रे ताकू गोटे आंसर सीट दिया गला हला। कौन दिया गला, ता गोटे आंसर सीट दिया गला। देन आई रोट माय नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। सब पिला न भलिया एज यूजुअल सी तांकर ना विंस्टन स्पेंसर चर्चिल पूरा ऊपर लिखि देले। ओके, आउ कौन कले, आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट ए ब्रैकेट राउंड इट। अच्छा, नॉर्मली आप कौन करछे, जते नेम लिखि दोछे, क्वेश्चन मार्क दोछे, क्वेश्चन नंबर लिखुछे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, काहे ना आमे गोटा ऊपर गोटे अटेंड करी करी जिबा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो से मध्ये कौन कले, ही जस्ट रोट क्वेश्चन नंबर 1। सो आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन, माने हमें जो कुछ बेसी भाभी भाभी कर कौन लिखिबा कौन लिखिबा कौन लिखिबा। मुझे गत काले हेडी तुम गोटे एग्जांपल देउतली हला, तमे तेलुगु लैंग्वेज जानि न, बट गोटे तेलुगु क्वेश्चन पेपर आछि, तमे कौन करियो, क्वेश्चन पेपर देखियो, तापरे तम नाटा इंग्लिश रे लिखि देबो हला, तापरे कौन करियो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखियो। कैन यू राइट एनीथिंग एल्स, तापरे आप लिखि परियो कि, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज़ यू डोंट नो तेलुगु लैंग्वेज। Similarly, he didn't know Latin language. So he just wrote question number 1 after much reflection. तापर बहुत भाभी he just put a bracket. ताको कौन कले, गोटे सुंदर ब्रैकेट देले हला। कौन करिया आदि किछि काम धंदा नाही, घंटे 2 घंटा परीक्षा हबो, आंसर तो किछि आसुनी, भाभी आपको जदि किछि न आसला हम कोन करछे, राउंड राउंड बॉल तैयारी करछे ना, नहीं ता पछे गोटे चित्र करछे, काहे ना किछि तो आसुनी। आउ केते पिला देखिथियो सोई पड़थि एग्जाम टेबल ऊपर, आउ केते पिला अन्य अन्य को चाहि देबे, आउ केते पिला बसे केंति गार पकोथि से टेबल तळे। सो दिस इज हैपनिंग एंड इट इज वेरी फेमिलियर थिंग टू यू, तमे भलसे जानथियो ना नहीं। बट देन आफ्टर आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विथ इट दैट वाज एदर रिलेवेंट और ट्रू। देन आफ्टर मींस आफ्टर पुटिंग दिस ब्रैकेट पकेला परे से आ जानी पारलेनी जे कौन आपको कनेक्ट करके लिखिबी, बिकॉज ही डिडंट नो लैटिन लैंग्वेज, तांको लैटिन लैंग्वेज जणाई नथिला, आ से कोन लिखे। सो ही कुड नॉट नो व्हाट टू राइट, ही कुड नॉट नो व्हाट टू राइट, से जानी पारनथले कोन लिखिबे, सेति में से कोन गले एदर रिलेवेंट और ट्रू, मान आकु कोन नै कि लिखले ठीक हबो बा कोन नै लिखले भूल हबो तांको जणा नथिला। तो बेटर कोन हबो, साइलेंट बसिबे ना, नहीं तमे देखि दियो प्ले
आमर सिना ये कॉलेज मानक किसी होनी जब अलग जगह को जाइए परीक्षा देवाई किसी जदि न आम कौन करे गोटे मुभीर स्टोरी लिखि दौचे सिनेमार स्टोरी लिखि दौचे पलि आस कौन लिखिलु कि ना गोटे सिनेमा स्टोरी लिखिदेली 5 पेज फुल करदे पलि आसली कि आम कॉलेज में जब सिनेमा स्टोरी लिखिदेवा सार मैंने देवे हाँ ना ना तो सी तो सेमती किसी लिखिपारे ना कारण से एंट्रांस एग्जामिनेशन देवाई जाऊँच तो सी कि लिखिपारे सी किसी न लिखिक धीरे बसले ओके incidentally there arrived from nowhere in particular a blood at several smudges. So as you know, crying is the weapon of a child. कांदिबा गोटे पिला मानकर अस्त्र बाबा मत एटा आनी दियो न आनले कांदिबे माँ मु एटा मत गोटे भल मोबाइल दियो न आनले कांदिबे ना नहीं कांदिले सब सक्सेस ना कांदिबा होची ताको पे एक weapon गोटे अस्त्र तो एठी पिला से अस्त्र यूज करेनी बट इमोशन है इमोशन है किसी कांदिबा स्टार्ट करछन के विंस्टन स्पेंसर चर्चिल हला सो एठी गोटे वर्ड देखो प्ले ब्लड एंड स्मॉजेस drops of tears that have made stains on papers drops of tears okay आखिरु लुह धार धार खसी जाइछि आंसर सीट रे कौन लिखाई किसी भी लिखाए केवल ना लिखाई आ क्वेश्चन नंबर 1 लिखाई आ क्वेश्चन नंबर 1 को गोटे सुंदरिया ब्रैकेट पड़ी he had not written anything else just he wrote question number 1 and also he wrote his name on the top of the page and he could not know what would be connected to this question number 1 so he started crying and drops of tears made way to the answer sheet आखिर धार धार लुह खसिक आंसर शीट रे पड़ला आखिर धार धार लुह खसिक आंसर शीट पड़ला अब आंसर शीट पूरा पूरी उदा हे चलछि ओके I gazed for 2 whole hours at this sad spectacle and then merciful users collected my piece of foolscap with all the others and carried it up to the headmaster's table. Okay, so what happened? I gazed for 2 whole hours. So the exam time was 2 hours. परीक्षा केते समय थिला 2 घंटा परीक्षा थिला आ 2 घंटा परीक्षा तमे भल से जानिछो गोटे सीरियल सरिया पे हाफ एन आवर एनफ 2 घंटा काल पले कोन करियो कहलो बसिक कांदुचंदी कहीं बड़ कष्ट लिखिं ना तापर लिखिं क्वेश्चन नंबर 1 तापर भाभी भाभी गोटे ब्रैकेट पकईछंदी तापर आ किछि कनेक्ट करि पारि ना सो आखिर लुहरे हला लिखिं कोन लैटिन प्रोज आखिर लुहरे लिखिं लैटिन प्रोज एथरा बुझी पाछ प्ले ऑफ माय लैटिन प्रोज बलसे देखो से कोथरे लैटिन प्रोज लिखिं आखिर लुहरे सतरे में लैटिन प्रोज लिखिं किसी भी लिखि ना यहाँ को कौन गोटे आयरनिकल यूज माने जोटा अपोजिट एबे सपोज गोटे पिला परीक्षा खराब करछि परीक्षा फेल होइछि सी जाइकरी रिजल्ट देखि ता बाबा पाखु जाइछि बाबा मु परीक्षा फेल हो गली ता बाबा कौन कहछन बहुत बढ़िया कल अच्छा बहुत बढ़िया कल एटा पॉजिटिव ना नहीं यस तो एक्चुअली से कौन बाबा खुशी कहले बहुत बढ़िया कलु दैट इज आयरनिकल थिंग इट इज आयरनी मीन्स अपोजिट बहुत बढ़िया कलु माने बहुत खराब कलु सो जे कोन मोर लैटिन प्रोज लिखि कि लैटिन प्रोज नथिंग वाज रिटन किछि भी लिखा नहीं जस्ट ड्रॉप्स ऑफ टीयर्स देन आई गेज्ड यू नो GAZE गेज मीन्स लुक constantly gaze means look constantly जोटा कि मैं डैफोडिल भी पढ़ छे so I gazed for 2 whole hours the exam duration was 2 hours so he gazed for 2 hours to the foolscap here foolscap refers to the answer sheet try to understand these things Latin prose foolscap okay means exam duration okay
And the merciful users collected my piece of foolscap. What do you mean by merciful users? Users means the attendant. जोटा कि आम कहे पियन बा जो मान एग्जाम ड्यूटी दि जाए आम इनविजिलेटर कहे बट आमर ये इनविजिलेटर किए टीचर मान ही इनविजिलेटर बट से जेहेतु एंट्रांस एग्जाम होता मर्सीफुल मीन्स काइंड हार्टेड यूजर्स मीन्स अटेंडेंट collected the full scap means answer sheet टाउ कलेक्शन करछन का बदल कलेक्ट करछन स्पेंसर चर्चिल थारू आंसर sheet टाउ कलेक्ट करछन not only from Spencer Churchill but also from other students who had come to appear the entrance examination जो पिला माने एंट्रेंस एग्जाम देबा पे आस्थिले समस्त को पेपर को कलेक्शन करछदी मर्सीफुल यूजर्स आ तमे जानिछ आंसर शीट रो कलर केमिति गिरि अछि आंसर शीट पूरा लुगरे बुडी गिरि अछि किछि भी लिखा हैनी केवल ताना ना लिखा हैछि आ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हैछि आ गोटे सुंदर ब्रैकेट रे अछि ओके बट से कहछदी मु बढ़िया लैटिन प्रोज लिखिछि कोन लिखिछि बढ़िया लैटिन प्रोज लिखिछि it was from these slender indications of scholarship that Dr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into her hour. And this copy was taken to headmaster's table. Say answer sheet headmaster table पाकु जाइछि आ हेडमास्टर ना तुम जानिछ डॉक्टर वेल्डन से पूरा पूरी डॉक्टर वेल्डन कर देले हला ए जो गोटे स्लेंडर इंडिकेशन स्लेंडर मींस व्हाट वीक स्लेंडर मींस थिन स्लेंडर मींस वीक हला ये गोटे छोटिया इंडिकेशन थिला मोर आखिर लुहर लैटिन प्रोज रो गोटे छोटिया इंडिकेशन थिला जेते बेले से फुल स्कैप टा निया आइछि हेडमास्टर के टेबल ऊपर को हेडमास्टर कौन भाविले भगवान को जना बट सिलेक्ट कर दले यू आर वर्दी टू पास तुम्हें आम स्कूल रे पढ़िया पे योग्य जदि बोले आमके एमितिया टेक्निक मिल जाई थांदा आमके एंट्रेंस चांस मिल जाई थांदा आमे कोन करता दे किछि करना था कांदे गिरी टिके पळे आस्ता दे बस हमको सिलेक्शन हे जाता ना नहीं आमे सिलेक्ट हे जाता सही टाइप रो से हला सिचुएशन सही टाइप हला कोकले he drew the conclusion से conclusion draw कले that I was worthy to pass into her जे एई पिलाटा पूरा पूरी योग्य आम स्कूल रे पढ़िया पे काई ना ये भलो कांदुची कणा सुंदर भाव रे कांदुची नाइ पिला एक्चुअली सेमिति नाइ हला it was very much to his credit it showed that he was a man capable of looking beneath the surface of things a man not dependent upon paper manifestations बा बेसी टिके टेका हे छिले से एमिति गोटे लोक के हाउ वाज डॉक्टर वेल्डन ही वाज अ पर्सन हु कुड सी द थिंग्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द थिंग्स हु कुड सी द थिंग्स ऑपोजिट साइड ऑफ द सरफेस एबे पिले ए जो वॉल ता तुम देखुछ बा बोर्ड देखुछ ता पछपटे कोन अछि हमको देखा जाउनी बा हम जो फ्लोर देखुछे ए भीतर कोन अछि हमको देखा जाउनी किंतु डॉक्टर वेल्डन एमिति गोटे लोक जे कि गोटे सरफेस तळे थिबा किछि जिंस को से देखि पाथले अच्छा एटा कहबार माने कोन ना मु जो लिखिछि लैटिन प्रोज कांदी कांदी गिरी किछि लेखिनी आखिर लुहरे पूरा पूरी विजय देछि ए भितरे से बोधे मोर मनर कथा पढी पारले दैट इज ही कुड सी द थिंग्स बीनीथ द सरफेस सरफेस तळे थिबा किछि जिंस को से देखि पारले अर्थात मोर लुह तळर फीलिंग टा को से बुझी पारले बोली विंस्टन स्पेंसर चर्चिल कहछथि ओके राइट so it showed that he was a man capable of looking beneath the surface of things a man not dependent upon paper manifestations पिले आजिकल रे टीचर माने बेसी पेपर मैनिफेस्टेशन रे आजिकल कोन टीचर माने तो पेपर मैनिफेस्टेशन भलो लिखिले मार्क दिया हो खराब लिखिले मार्क दिया हो सेठी किछि पिला भाबुथे सर कोन एडा आपन पॉकेट बाणी दोछो देखि लिखिछु तो आमे जहा भी लिखिछु दे दियंदु 100 मार्क रो 80 90 दियंदु सर तापर देखिया ना नाही किंतु भलो पिला ने कोन कहंदे आमे जेतिक लिखिछु सेतिक दियंदु खराब पिला कोन कहे आमे न लिखिले पते 95% हमको दरकार ना नहीं हमको केते परसेंट दरकार 99% दरकार 95% दरकार काई ना टीचर जाके भल नाही पेपर मैनिफेस्टेशन रे डिपेंड करछोली पेपर चाଷ ताको दरकार पेपर मैनिफेस्टेशन मींस पेपर डिस्प्ले माने पेपर लिखिले मार्क देबा पेपर न लिखिले मार्क देबानी किंतु
डॉक्टर वेल्डन सेमितिका लोक नुहंती लिखिले मार्क देबे न लिखिले भलैगिरी मार्क देबे एग्जांपल दिस वन जो पिला लिखिछन्ती सेमाने सिलेक्शन केते हेइछन्ती कि नाही तार रिपोर्ट हम पाखरे नै किंतु ये किछि न लिखिगिरी आखिर लुहर किछि ड्रॉप पके देगिरी ये सिलेक्शन हेइछन्ती सो ही सेड दैट आवर हेडमास्टर डॉक्टर वेल्डन didn't believe on paper manifestation didn't believe in paper manifestation and I have always had the greatest regard for him अब मोर सबले तांको पई greatest regard रहिबो regard means what respect regard means you know respect मोर तांको प्रति सबले respect रहिबो हला काहे ना पिले एटा तो कहया कथा नहीं ऑनलाइन क्लास रे आमे को टीचर को केबे भूलिबानी कहलो नॉर्मली जो टीचर भल से पाठ पढ़ाती आ भल सजेशन दियंती भल एडवाइस दियंती से टीचर को आम केबे भूलिबानी हाना नहीं आउ सेकेंड रे आउ गोटे कथा मते कहबी आमे को टीचर को भूली परियानी माने कर तुम एग्जाम रे एग्जाम दउचो गोटे टीचर नडिया गछ ऊपर चढ़ेगिरी ना नहीं झरका पटे तुमको कॉपी दैछंती खुशी रे तुम कॉपीटा को करिछ लिखिछ सार नडिया गछ चढ़ला ताकर आंटू गंडी छिड़ी जाइछि तुम आसला पर सार को पाद धरि पके सार आपण को मु केबे भूली पारिबिनी काहेकि ना आपण को पे नडिया गछ ऊपर चढ़थिले आंटू गंडी छिड़ैथिले आमे आपण को भूली पारबो मल्ला पर्यंत आमे आपण को भूली पारबो ना नहीं तो काहेकि ना से हमको सेकंड वे बतैथिले बुझा पड़छ ना इट इज डोंट टेक इट इनटू हार्ट जस्ट आई एम जोकिंग ओके सो सिमिलरली सी कहते मु मो टीचर को केबे भूली पारिबिनी काहेकि ना मु किछि न लिखि मते सिलेक्ट कर दैछथि ओके सो लेट अस डिस्कस द रिजल्ट अबाउट द एग्जाम बर्तमान हम देखिया एग्जाम रो रिजल्ट केमिति कार हेगिरा आछि लोह भिजा पेपर रो रिजल्ट बा मार्क्स केते आछि देखिबा इन consequence of his decision I was in due course placed in third or lowest division of the fourth or bottom form okay try to understand he got third division of fourth standard as you know he had come to join standard 4 yes or no से कोडी जॉइन आक बसले फोर्थ स्टैंडर्ड जॉइन आक बसले तो से को डिवीजन पाइले फर्स्ट क्लास पाइले इम्पॉसिबल किछ न लेखि कि फर्स्ट क्लास हमरे सेकंड क्लास नॉट पॉसिबल थर्ड डिवीजन यस काहे ना तम पास करिया पड़छि ना पास कला पर से एंट्री करिबे स्कूल को माने सो से कोन ले फर्स्ट क्लास देखाइले फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास पिला फर्स्ट क्लास लिस्ट second class list third class list so he became the lowest form third division paile fourth standard ro third division paigri pass hele udigi entrance exam रे school le join habe the names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order and as my correct name Spencer Churchill began with an S I gained no more advantage from the alphabet than from the wider sphere of letters. New thing. जेतबे पिले स्कूल लिस्ट पळे आसला स्कूल रो सिलेक्टेड लिस्ट पळे आसला जो पिला माने की एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे भलो करिकरी पास करचंती बा स्कूल रे नाम लेखिया पे उत्तीर्ण हेइचंती बा योग्य विवेचित हेइचंती से मानक गोटे लिस्ट आसला आ दुर्भाग्य से लिस्ट टा अल्फाबेटिकली ऑर्डर रे लिखा जाए the name of the selected students were arranged alphabetically you know alphabetically means what a to z बने करो जण ना अमित फर्स्ट रहबो ओके अमित अंशुमान तापर बी रे वैभव सी रे तो अल्फाबेटिकली सजडा होची तो केमिति अल्फाबेटिकली सजडा छै देखो मॉडल लिस्ट रे करची फर्स्ट क्लास रे a to z अल्फाबेटिकली सजडा छै second class list रे a to z alphabetically third class plan ro a to z alphabetically but his name was Spencer Churchill his name started with an s s means not very close to a b
A B C D E F I J K L M N O P Q R S. Means A to S, it is a wider sphere of letter. It is a wider sphere of letter. ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି B ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ I am very unlucky, I am very unfortunate because my name starts with an S. Okay, ବୁଝା ପଡୁଛି ତ? A third list ର ତାଙ୍କ ନାଁ S. This is called wider sphere of letter. Wider sphere of letter. A to S, wider sphere. This is very wide. ना नहीं A पर B, B पर C पर S जाइକି ଅଛି. से कहउଛନ୍ତି ମୁଁ ନା ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ରୁ କିଛି ଭଲ ପାଇଲି, ନା ମୋ ନା ରୁ କିଛି ଭଲ ପାଇଲି. ମୋ ନା ଯେହେତୁ S, ମୁଁ ସେଥିରୁ ବହୁତ କଣ ପାଇଲି, ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ଭଳିଆ ପାଇଲି. କଣ ହେଲା? Then I was in fact only 2 from the bottom of the whole school, and these 2, I regret to say, disappeared almost immediately through illness or some other cause. अरे बड़ा प्रॉब्लम है ये बिलीफ कहना से थर्ड डिवीजन में जो लिस्ट बहाला, थर्ड डिवीजन में जो लंबा लिस्ट बहाला, his name was third from the bottom. हम जे ओडिया रे कहूचे मोर नाडा कोडी जानछु से तू तळाड़ देखि देखि बोले 3 नंबर रे थिबो. So third from the bottom, this is called third from the bottom. Last आड़ को 3 नंबर तक ना काहे S name starts with an S. So she कहले I am very unfortunate, I am very unlucky because my name didn't support me, my result didn't support me. ना मते result support करछि, ना मोर ना support करछि. हला the Harrow custom of calling the roll is different from that of Eton. Custom of calling the roll. Roll call तुम जानते हो जब क्लास में आउची roll 1, roll 2, roll 3 एमिति डका होची ना हम स्कूल बा हम कॉलेज मान करे. किंतु Harrow स्कूल रे the custom of calling जोटा कि रोल डाकिबार प्रथा, रोल डाकिबार कस्टम किछि डिफरेंट थिला. that of Eton means Eton थारो किछि डिफरेंट थिला. तो Eton रे केमिति रोल कॉल निया होतला? At Eton the boys stand in a cluster and lift their heads when their names are called. Eton school रे पिले कोन होतला ना जेतेबेले पिलानकर ना डका होतला हला मिस्टर एक्स, यस सर, सी जस्ट ता टोपीडा कोन करतला हेड, हेड बेले देखुछ तो हेड एडा होची केफ जो चारि पटे थिबो सेडा कोन हेड, यस सर. मिस्टर वाई, यस सर. सो ठिया ही जण जण केप को उठे गिरी से रेस्पोंड करतले कोडी Eton स्कूल रे हला. सो एट Eton the boys stand in a cluster and lift their heads when their names are called. At Harrow they file past a master in the school yard and answer one by one. But Harrow school रे different कोन, Eton school रे different कोन ना. Eton school रे पिला माने गोटे क्लस्टर रे ठिया होतले आ ताका टोपीटा को टेकुतले जेतेबेले ताका रोल कॉल रखा होतला. बट Harrow school रे सेमिति सिस्टम नाही. Harrow school रे केमति थिबो बराबर प्लेटा स्कूल बाउंड्री एटा नंबर स्कूल ए पेपर रे हम स्कूल कर दा हैला एटा होचे स्कूल. स्कूल रे जिते सब क्लास रूम जगह थिबो बोले एटा होचे क्लास रूम जगह थिबो. स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 एटी स्टैंडर्ड 4 रो टीचर एटी ठिया थिबो. पिला माने एटी लाइन लगे ठिया थिबे, एठु आगोटे लाइन लगे थिबे, एठु आगोटे लाइन लगे थिबे, पूरा फाइल करी ठिया थिबे. आउ केमिति ठिया बे मन इच्छा नै अल्फाबेटिकली ठिया ए किए बी किए सी अल्फाबेटिकल अरेंज करी ठिया बे. अब ये कोन तुम जानि चाहिए लास्ट आड़ को 3 ना नहीं लास्ट आड़ था. अब से बहुत अनलकी जे लास्ट दीटा बॉय स्कूल छाड़ दे, लास्ट दीटा पिला कोन करले स्कूल छाड़ दे. अब ही बिकेम द लास्ट बॉय ऑफ हिज क्लास. दीटा पिला पछरे थिले केते दंब ना ना नहीं मु लास्ट नहीं कहना मु पछरे दीटा डबा और अछि. बट अनलकीली गोटे पिला देह खराब ना कोन स्कूल छाड़ देला, आरो पिला स्कूल छाड़ देला एंड ही बिकेम द लास्ट बॉय. एटा गोटे बढ़िया क्वेश्चन आसियो, how was he become the last boy? Because of his bad result, because of his alphabetical name arranged in that school, and how the 2 boys disappeared in the school and he became the last boy. Okay, so
At Harrow, they file past a master in the schoolyard and answer one by one. Answer one by one means kona? Mr. X, yes sir, कहीं से भितर हो जियो. Mr. Y, yes sir, कहीं से भितर हो जियो. सारे ठीक है. जड़ों पर जड़े पास करते हैं. एटनेस एम दिन आओ. आप पिला हजियार नहीं कि टेंशन नहीं. अब विंस्टन चर्चिल ठिया थी पूरा पूरी लास्ट पे कहेंगे ना लास्ट दीटा बॉय स्कूल छाड़ देले and he became the last boy of his class. My position was therefore revealed in its somewhat invidious humility. Okay, invidious humility. My position. मोर अवस्था बिले पदार पळे आसला रिवील्ड माने मोर सीक्रेट पदार जणा पडला जे मु क्लास रो सबटु गध पिला ना नहीं मु लास्ट रे आसुची मु थर्ड डिवीजन स्कोर करची सो मोर सब जाक पदा को पळे आसला जे आई एम द लास्ट बॉय ऑफ द क्लास. इट वाज द ईयर 1887 रेला सर दिन थर्ड. So it was the year 1887. Lord Randolph Churchill had only just resigned his position as leader of the House of the Commons and the Chancellor of the Exchequer, and he still towered in the forefront of politics. In consequence, large numbers of visitors of both sexes used to wait on the school steps in order to see me march by, and I frequently heard the irreverent comment, "Why he is last of all?" एथर पिले पदा सब कथा जणा पड़ी गला. Why Winston Churchill was selected? एथर जणा पड़ला ना नहीं? Because his father was Randolph Churchill. His father was Randolph Churchill. It was the year 1887. Lord Randolph Churchill had only just resigned his position as leader of the House of Commons. House of Commons. तब जानछो हमर जेमते इंडिया रे पार्लियामेंट रे दीटा अछि सदन आमे कोछि लोकसभा राज्यसभा सेमिति इंग्लैंड रे सेई टाइप रो हमर अछि हला जोटा कि हमर दीटा भी सदन अछि गोटे होछि हाउस ऑफ लॉर्ड हाउस ऑफ कॉमन. अब हाउस ऑफ कॉमन रे ये थिले मेन लीडर जोटा कि हम कहि परिया हमर लोकसभा रे जोटे मेन लीडर थिबे बा स्पीकर थिबे ताकर को जदि गोटे स्कूल रे पाठ पढिया को आसीओ स्कूल रो डिग्निटी बढ़ियो रे ने. एबे हम टाउन रो गोटे विराट बड़ लोक मन सचिन तेंदुलकर पुआ आसला पाठ पढिया पे हला मुंबई रो गोटे स्कूल को से स्कूल रो डिमांड बढ़ जियो काना पेरेंट टीचर मीटिंग रे सचिन तेंदुलकर आसीए ना पिलाडा को देखिया पे बहुत लोक आसीए. एथरो जानि परलो डॉक्टर वेल्डन एक्चुअली से सरफेस ऑफ थिंग रे जिंस देखि पारछंती ना रैंडम चर्चिल को ओली ताको सिलेक्ट करछंती. ये टिके बेसी भाबी दिछन के स्पेंसर चर्चिल जे आम हेड सर सिमि दिया नै बहुत बढ़िया हेड सर हमर पेपर मैनिफेस्टेशन ने से विश्वास करंदनी ए लेखा लेखि रे विश्वास करंदनी मोर आखिर लुह देखि से लैटिन प्रोज मोर जान देले मते सिलेक्ट कर देले पिला लोक से जान ना बट सत कथा होची काहे कि से सिलेक्ट कले बिकॉज़ ही वाज द सन ऑफ रैंडम चर्चिल and he had just resigned his position as leader of the House of Commons and the Chancellor of the Exchequer, and still towered in the forefront of politics. तथापि और से राजनीति रो आगधाड़ रे से राज पॉलिटिक्स करछते. In consequence, large numbers of visitors of both sexes used to wait on the school steps. In consequence, what do you mean by consequence? Consequence means result. Consequence means result. Consequence अर्थ होछ कोन मीन कोन result. सेथि पाई जेहेतु मु रैंडम चर्चिल कर पुओ मते देखिया पई स्कूल बैरेंडा रे बहुत लेडीज और जेंटलमैन मते वेट करथिले. ओके in order to see me march by मु केमिति मार्च हे किछबी बा लाइन बांधी के जिबी मार्चिंग माने कोन लाइन बांधी के जिबा से भीतर मु जाउथि मते देखिया पे बहुत सेक्स पर बोथ सेक्स रे आसले माने बहुत लोक आसले से भीतर लेडीज भी थिले और से भीतर जेंट्स भी थिले. एंड आई फ्रीक्वेंटली हर्ड द इरेवेंट कमेंट्स व्हाई ही इज लास्ट ऑफ ऑल. हम सब बळे फ्रीक्वेंटली मते गोटे कमेंट्स बुथिया व्हाई ही इज लास्ट ऑफ ऑल.
अरे अरे किए किए रैंडम चर्चिल रो पुओ ना एठी से पिलाटा आछी ओ ये पिलाटा रैंडम चर्चिल रो पुओ अच्छा ये सबले पछरे काहे आछी आ गदुडा आइतो पछरे काहे आछी व्हाई ही इज लास्ट ऑफ ऑल ये जो इरेवेंट कमेंट मते सुनिया मिलुतला इरेवेंट माने कोन डिसरेस्पेक्टेबल माने सम्मान असम्मान इरेवेंट कमेंट्स आउ गोटे पिले इनविडियस ओके इनविडियस मींस अनएनविएबल ह्यूमिलिटी मींस हम्बलनेस ह्यूमिलिटी माने कोन बढ़िया वर्ड है ह्यूमिलिटी माने करो तमे वो क्लास अटेंड करछो गोटे पिला को मते इच्छा नै ताको सब बेले कमेंट पास करे हला बेसिक क्वेश्चन पचारि से जेमति कहि परियोनी ताको ह्यूमिलिटी करी माने मेंटली टर्चर करबा दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी आ मते भी फील होतला जे मु मते मेंटली बहुत टर्चर करा होची काहे ना मु पूरा लास्ट रे जाउची बाहर लोक माने मते कमेंट मारछथि दिस इज माय पोजीशन ओके पिले टाइम इज ओवर ओके नेक्स्ट क्लास we will discuss thank you this video